वो लम्हा जिसका सबको इंतज़ार था। चाय के ब्रेक में मुझे पता चला कि आधे से ज़्यादा शहर सिर्फ सर मुसर्रत को सुनने के लिए आया है। टुडे वी आर ऑनर्ड टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर मुसर्रत हसन, whose presence make us feel inspired, valued, and we are ready to impart. Dr. Musarrat Hasan, your leadership and guidance have been instrumental in shaping the ultrasound in obstetrics and gynecology, and we are grateful for your unwavering support. Ladies and gentlemen, please welcome the chief guest today, Dr. Musarrat Hasan. Thank you very much. Thank you very much. I'm nervous, but I'll try not to be nervous. नहीं, इधर से स्क्रीन पे नहीं आया। आगे वो वॉल्यूम चेक करें। अच्छा, I request the audience to please stand up to honor Dr. Musarrat Hasan. Please start up with the national anthem. thank you. मुझे एक दफ़ा किसी ने डांटा था कि कौमी तराना तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए चलता है, तो मैंने कहा हम कोई कम है क्या? हमारे सारे एक्सपर्ट्स प्रेसिडेंट से ज़्यादा ही हैं। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, the most merciful. So finally the biggle has begun. ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अभी तक बनी हुई है। Thank you, Dr. Shaheen Zafar, Dr. Samina, and others for inviting me to this August forum and gathering. I'm really, from the bottom of my heart, thank you for inviting me. डॉक्टर शेरशाह के बारे में और मेरे बारे में किसी ने कहा था कि ये क्राउड पुलर हैं। कायदे आज़म एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे तो लोगों ने शोर मचाया कि आपने अभी तक क्या किया।
तो उन्होंने कहा हमने इतना आदमी जमा किया। मैंने अपनी बेटी को कॉल किया कि मुझे ये इनवाइट किया गया है इस फोरम में, तो मेरे बारे में कुछ लिख दो, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में कुछ लिखूंगा तो वो कहावत है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ खुद करना। So she wrote these and she called me कि अब्बा आपके अंदर कोई बुराई है? मैंने कहा yes, I am not clever. I've been always talking about humbleness, and to be humble to senior is your duty. To be humble to equal is courtesy, and to be humble to junior is nobility. So I try to match. I'd be sincere and humble to seniors, equals, and juniors as well. When we talk about 5 gates to heaven, my top priority is service to humanity, and that's what I've been doing for the last 42 years. I'm afraid of pride, avarice, greed, ambitiousness, envy, and anger, because that can bring the downfall. Pride of neki, which is goodness, is the worst. I have antidote for every thing which I just said. An antidote for pride of neki is कि आप एक गरीब आदमी से झुक के सलाम करके बात करें तो आपकी नेकी ज़रा जो प्राइड है उधर कंट्रोल में आ जाएगी। इसीलिए मैंने ये ईविल आई की तस्वीर डाली है ताकि आप लोग नज़र ना लगाएं। मुझे बाकायदा डायरेक्शन दी थी डॉक्टर शाहीन जफर ने कि माय फैमिली लाइफ आई शुड टॉक अबाउट, पूरा एक इन्वर्टेड कॉमा में, माय प्रोफेशनल कैरियर, my achievements, my failure and regrets, and message to the audience. Failure is not a failure if you learn from it. तो जो fourth item था वो मैंने पहले ही बता दिया, and I have got no regrets in my life. The only man who never makes a mistake is the man who never does anything. And I've done a lot in this 42 years. Every successful person has a painful story, and every painful story has a successful ending. तो मुझे अपना सफ़र भी कुछ बताना है आज. I keep this slide with me all the time, but since all accomplished people are sitting here, I don't mind saying, मैंने डॉक्टर महमूदा सईद से ये बात सीखी कि नेकी को छुपाना भी चाहिए और कुछ थोड़ा बहुत बताना भी चाहिए ताकि लोगों को उनकी इस्लाह हो सके. So I'm going to do that today. That's me and my mother. I cherish this picture a lot. I love this picture. It's always in my phone. And this is the first picture which I had with my mother. My grandfather kept my name, my elder brother, my elder sister, me sitting in the center. My grandparents, my grandmother and grandfather, they were my spiritual father and mother. I learned a lot, and they taught me discipline and wisdom. I was born
in collector's house in Larkana, because my father was collector at that time, which is now called Deputy Commissioner. And this is the gate of that collector's house, now changed to जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब मेरी पैदाइश के ऊपर घर आए थे और उन्होंने मुबारकबाद दी थी और फलों का टोकरा और मिठाई का टोकरा साथ लेके आए थे. I met him after, when he was president of Pakistan. He came to Circuit House in Hyderabad, and I was with my father. I said, I want to take photograph from him, autograph from him. So when I was there, तो उन्होंने कहा, नुसरत साहब, ये वही लड़का है जो लड़काना में पैदा हुआ था. So he writes, with very best wishes to young Larkanite Zulfikar Ali Bhutto. मैं लड़काना बाद में 2 मरतबा गया और 1 मरतबा सिर्फ चाय पीने के लिए गया. तो डॉक्टर सिकंदर कार्डियोलॉजिस्ट जो है वहाँ, उन्होंने कहा कि देखें बड़े होटल में नहीं पिएंगे, ढाबे की चाय पिएंगे ताकि आपको याद रहे. So that is in Larkana. My younger brother Rafat recently made Shajara in English, and this is my great-great-grandfather and great-grandfather, grandfather, and that's my family tree, my parents and my siblings. इंडिया में एक ज़माने में इम्पीरियल कोरोनेशन दरबार की किताब छपती थी, and King George के हुक्म से छपती थी, and they were the defenders of the faith, Emperor of India, and they were the King of United Kingdom at that time. और उस किताब में मेरे great-grandfather, grandfather, great-grandfather, they were all collectors at that time in the revenue department. And that's my grandfather, Nurul Hasan. My father was a vice president of Aligarh Muslim University. He's sitting with Qaid-e-Azam, and he gave the welcome address, and he was the one to convince my father to come to Pakistan. And although he was an ICS officer, but he gradually, changed to CSP, Civil Service of Pakistan. We were initially 3 sisters, 4 brothers with our parents, and then after 12 years, we had the addition. So we have 4 sisters, 4 brothers, all alive, all doing very well, all settled in their field. This is the last photograph with my father. We have 4 brothers, and we are sitting with our father. My father's first salary was 300 rupees. And after 32 years, my first salary was 900 rupees as a house officer in radiology department of JPMC. मेरी अम्मी ने 100 रुपए तो सब बहन भाइयों को बांट दिए और 100 रुपए खैरात कर दिए. और वो खैरात आज तक हमारी. Dr. Nighat Shah, would you like to sing with me? Sindh jiye Sindhwara jiyan, Sindhi topi ajrakwara jiyan. Sindh jiye Sindhwara jiyan, Sindhi topi ajrakwara jiyan. So we have roots in Sindh. And when I visited Larkana, he said, you are the son of the soil. So the family grew, and then grandchildren's and my in-laws see me sitting in the center, and all the brothers, they're all here in the audience, sitting at the back. That's my wife, Simi, who died in 2018. And this is the walima of our, and this was a honeymoon which we did in Atlantic City, stayed in Trump Hotel, a casino, and that was at that time. The best photograph which I ever took was my daughter Fatma, and she is right here. And I always cherish my good memories with her, even today. We grew,
and she grew as well. And this is the last photograph of my wife. We are together, and she died in 2018. Then the story starts. I was father and mother at the same time for Fatma. She graduated as a doctor, and then she got a very good husband. And my son-in-law, I don't call him my son-in-law because we are friends more than son-in-law. And now we have more interaction with Fatma's Susral sitting right here with us. My unofficial first school was Government Ghulam Hussain Hidayatullah High School. I say unofficial because my brother was there, but I was too young to be admitted, so I would say I must go there. And this was a school in Hyderabad. मेरे ग्रैंडफादर क्योंकि डोनेशन देते थे उस स्कूल को, इसलिए मैं KG1 में हमेशा फर्स्ट आता था. और जब स्काउटिंग होती थी तो नौकर मुझे गोद में लेके जाता था परेड के लिए, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर उनको डोनेशन दिया करते थे स्कूल को. And then I moved out to Bonaventure High School, and then we moved to Dhaka. I was telling Dr. Sirajuddaulah that I have remained there for 6 years, from 1960 to 1966. And this is a school which I was studying in, which I visited after 35 years, and I was shocked that my class teacher right here was alive, and my principal was alive, and these two ladies were my class fellows at that time. So they were in the age of 80s and 90s, and they were still alive when I went to Dhaka to give the lecture over there. एक कहावत है कि एक अच्छे इंसान की क्या पहचान है? And the answer was given कि जिसके दोस्त पुराने हों और जिसके employees पुराने हों. So these are my friends, 55 years, Cantonment School, and we all get together and cherish the good moments. All of them are accomplished right here, and we are seeing them in the picture. They are all here. I guess they are all here. Then I moved out back to Bonaventure High School and did my metric from there. 8th and 9th, I was in Kent Public. Metric I did there. And my very good friends, Fazal Abbas, he became colonel. I guess he is sitting in the audience. And Nadeem Kamar, who is minister in the government, he is my class fellow. We had good time with. And this is the picture from the Bonaventure High School. And Dr. Firoz Memon, son of Saleh Memon Saab, we were also class fellow. He's a cardiologist. And they're all enjoying. We are all friends. And then I moved to Cantonment College, Hyderabad. There I did my inter first time with mathematics and physics. And then one of our father's friend asked me, who was a doctor, कि आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? तो मैंने कहा नहीं, हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, ना ददियाल में ना नैनीताल में कोई डॉक्टर नहीं है. तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट गुड, यू शुड हैव अ फैमिली डॉक्टर. तो मैंने कहा हाँ, मैं अपने छोटे भाई को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए. कहने जितना आप उसके ऊपर एफर्ट लगाएंगे, इससे कम एफर्ट में आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे. तो मैंने अपना रिपीट किया बायोलॉजी से और मेडिकल कॉलेज में आ गया. मेरे खिलाफ सब लोग थे, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स, सिस्टर्स, एवरीबडी वाज अगेंस्ट दिस डिसीजन कि ये तुम क्या कर रहे हो. तो मुझे ये कोट याद आया, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू इट. एंड आई डिड इट. आई बिकेम अ डॉक्टर. Then came the medical college. All our friends, Altaf Hashmi from SIUT is also our class fellow, and all the rest of the girls. Dr. Gulnar is sitting here, and there are many people sitting in this audience who are class fellows right here. And Dr. Yasmin Sumro, who works very well with Dr. Sadka Jafri, is also seen in the audience, and everybody is here. जिंदगी में कहते हैं कि अगर
आपको कोई it will be same year after year unless the books you read and the people you meet. I came across my friend, Esat Yurikli, he was from Turkey, and he said after MBBS, what are you going to do? I said, I'm going to open a clinic here, and no, you must go for post-graduation. And I said, I don't have money for post-graduation. He said, don't worry, I will finance you. He financed me, and I went abroad and did my fellowship from Jefferson. I did my visiting fellowship. ये जो MD का word है, when I was registering myself, they said, I said, I've come to register and I'm a doctor. He said, yes, you are a doctor. Are you PhD? I said, no, I'm not PhD. Ah, that means you are MD. So that's how the MD is written here. Choices makes the destiny. And I have very interesting stories. I was offered $2,000 US job before when I was finishing my fellowship with the accommodation and transportation, everything would come to more, but $2,000 US cash. And I didn't take that. I came back to Karachi because I wanted to serve my country. But when I came here, I had no money, so I had to apply for a job. And I applied for a job. And the director of that institution, I would not name, उन्होंने मुझे 4 पेशेंट दिए क्योंकि उनको अल्ट्रासाउंड नहीं आता था. तो उन्होंने कहा कि आप 4 पेशेंट देखें, अगर आपने अच्छा किया तो हम आपको रख लेंगे. And I did well, so they said, हाँ, you are selected, come from tomorrow. तो मैंने कहा, सर मुझे आप सैलरी क्या देंगे? कहने, are you married? उस वक्त I was not married. Do you smoke cigarette? I said, no sir, I don't smoke cigarette. आप शराब पीते हैं? कुछ ड्रिंक विंक का शौक है? मैंने कहा, नहीं सर, मुझे ड्रिंक का भी शौक नहीं है. कहाँ रहते हैं आप? मैंने कहा, मैं अपने पेरेंट्स के साथ. ऐसे ही बंदे की तो हमें तलाश है. तो मेरा ख्याल से 2,000 रुपए पर मंथ सही रहेगा. I was taken back कि मैं $2,000 की जॉब छोड़ के और 2,000 रुपए की जॉब. So I didn't take that. I was disappointed. I didn't take that job. And then I told my father कि मुझे कहीं आप लोन दे दें तो मैं कुछ अपनी क्लिनिक खोल लूँ. कहने, नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं हैं. हाँ, ये कर सकता हूँ क्योंकि because of my reputation, I can refer you to a bank and you can get the loan from the bank. मगर ये ख्याल रखना कि जितनी प्रॉपर्टी है वो कोलैटरल में नहीं रखवाना क्योंकि वो तो सब बहन भाइयों की है. It's a joint property. So I went to the BCCI head in Karachi and he said कि कितना लोन चाहिए? मैंने कहा मुझे 9 लाख रुपए लोन चाहिए. 1983 की बात है. मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप कोलैटरल रखवाएंगे? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो कोलैटरल नहीं है. नहीं, आपका वैसे फ़ोन आ गया था तो हम आपको प्रॉमिसरी नोट पे 9 लाख रुपए दे देते हैं. So I ordered the machine, LC खोली, सब कुछ किया. जब मैं घर आया तो मुझे बहुत डांट पिटी फादर से. कहने लगे कि तुम्हारा क्या ख्याल है? कि मैं समझा कि तुम्हें 1 लाख रुपए लोन चाहिए होगा, तुमने 9 लाख रुपए का लोन ले लिया. आई एम नॉट गोइंग टू पे ऑन योर बिहाफ. सो वहाँ भी धक्का लगा. खैर ऑर्डर कर दी मशीन. तो उस ज़माने में डॉक्टर रज़ी महमूद साहब केशवर नाजली के हस्बैंड जो थे वो वाज वन इमीडिएट टीचर इन रेडियोलॉजी. आई वाज डूइंग हाउस जॉब बिफोर गोइंग टू अमेरिका. तो मैंने कहा कि सर मैं FCPS करना चाह रहा हूँ रेडियोलॉजी में. तो उन्होंने कहा डायरेक्टर ऑफिस में अप्लाई कर दो, जब हो जाए तो आ जाना. मैंने अप्लाई कर दिया. 2 महीने के बाद जब वो ऑर्डर आया कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर FCPS रेडियोलॉजी, तो बाय दैट टाइम रज़ी महमूद साहब रिटायर हो चुके थे और एक दूसरे प्रोफेसर साहब जिनको मैं भी नहीं जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे. मैं लेके लेटर उनके पास गया तो उन्होंने कहा ओह वेरी गुड, आप रेडियोलॉजी करना चाह रहे हैं, FCPS वेलकम. सुबह 7:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक आप वार्ड में होंगे और शाम में मेरी क्लिनिक है, वो आपने देखा होगा वहाँ,
तो वहाँ 3 बजे से लेकर 9 बजे तक आप वहाँ काम करेंगे। तो मैंने कहा सर मैंने तो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और अब मैं तो सोच रहा था कि सुबह में FCPS कर लूँगा, शाम में कुछ 2 पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यू हैव ए चॉइस, आइदर यू डू FCPS और यू डू अल्ट्रासाउंड। मैंने अल्ट्रासाउंड चुना और मैं फिर उस बोर्ड में कभी नहीं गया। पंद्रह साल के बाद एक साहब का फ़ोन आया कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो मैंने कहा कि किस चीज़ का? कहने गॉल ब्लैडर का। तो मैंने कहा उसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत है। कहने यस आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट, आई नो कि फास्टिंग की ज़रूरत है। तो मैंने कहा आप आ जाएं। जब वो आए तो वो सेम प्रोफेसर थे रेडियोलॉजी के जिन्होंने मुझे रेडियोलॉजी में FCPS के लिए मना किया। मैं खड़े होकर उनसे मिला। मैंने कहा सर आज जो कुछ हूँ वो मैं आपकी वजह से हूँ, वरना मैं अल्ट्रासाउंड में ये नाम नहीं कमा सकता। नई नई क्लिनिक स्टार्ट की मुसर्रत अल्ट्रासाउंड के नाम से। एक दिन मैंने स्टाफ को एक मैसेज दिया हुआ था कि अगर किसी के पास, पेशेंट के पास पैसे ना हो तो डोंट आस्क फॉर इट। और एक पेशेंट आया बिल्कुल लास्ट में, हुआ ए कैंसर पेशेंट, लिवर में मेटास्टेसिस। जब मैं निकलने लगा तो मैंने अपने रिसेप्शन से पूछा कि सारी रिपोर्ट्स दे दी? कहने नहीं, वो एक रिपोर्ट रह गई है और वो जो है वो पैसे लेने गया हुआ है। तो मैंने बहुत डांटा उसको। मैंने कहा कि तुमसे कहा था कि पैसे बाद में आ जाएंगे, तुम रिपोर्ट दे देते। खैर वो क्लिनिक बंद की, मैं घर आ गया। जब घर पहुंचा तो मुझे ख्याल आया कि मेरा जो ब्रीफ केस है जिसमें 40,000 रुपये पड़े हुए थे कैश, बिकॉज वो मुझे नेक्स्ट डे प्रिंटर ख़रीदना था, वो प्रिंटर वाला नहीं आया, और दैट ब्रीफ केस वॉज नॉट लॉक्ड। आई प्रॉबली लेफ्ट एट द क्लिनिक। मैं वापस दौड़ा, अंधेरा हो चुका था, एक आदमी बाहर टहल रहा था, एंड आई रिकग्नाइज दैट जेंटलमैन। कहने के सर वो मेरी रिपोर्ट आपने नहीं दी और मुझे मालूम था कि ये ब्रीफ केस आप ही का होगा, आप आएंगे तो ज़रूर। मतलब मेरी रिपोर्ट देने के लिए। तो अल्लाह मियाँ जो है ना वो ऐसे फरिश्तों को डिप्यूट कर देता है कि वो ब्रीफ केस का ख्याल रखें। My mother on the left side, my grandmother, my Taya, who was a professor of philosophy at Aligarh University, he saw my hand and said, "Oh, Musarrat, तुम तो इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड, तुम तो एक इंस्टीट्यूट खोलोगे।" तो मैं उस ज़माने में पामिस्ट्री करता था, तो मैं समझा कि मैं पामिस्ट्री का इंस्टीट्यूट खोलूँगा। आई डिडंट नो कि आफ्टर MBBS मैं अल्ट्रासाउंड का इंस्टीट्यूट खोलूँगा। एंड देन दैट वाज डॉक्टर बैरी बी गोल्डबर्ग, हु वाज माय इमीडिएट डायरेक्टर एट थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। My institute got affiliated with Jefferson, and I started doing courses. 35 साल के बाद सुना है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को डीक्लासीफाई कर सकते हैं, तो आज मैं ये डीक्लासीफाई कर रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन को। मैं रब साहब के वार्ड में गया एक पेशेंट को दिखाने के लिए, तो उनकी नज़र पड़ी, वो राउंड कर रहे थे। तो उन्होंने डॉक्टर मोहित काजी को कहा, मुसर्रत को कहो कि मेरे कमरे में बैठे, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा पता नहीं आज कुछ चेंज लग रहा है मसला। वहाँ आए, कहने के मुसर्रत ये सीनियर प्रोफेसर से पंगा लेने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा सर क्या हुआ? कहने यू डोंट नो, 16 professors have signed an application against you to the PMDC, and the application says that disciplinary action should be taken against Musarrat because he is running an institute and teaching a medical subject in that institute. उस ज़माने में किसी को पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में कोई वो नहीं मिला था। जब आगा खान was the first one to be accredited for medical college, ये उससे 6 महीने पहले की बात। केस चला और
मेरे पास डॉक्टर गोल्डबर्ग का फ़ोन आया, जो कि कभी नहीं आता. जब he called me on the line phone, उस ज़माने मोबाइल फ़ोन नहीं थे. Dr. Hasan, are you okay? मैंने कहा, yes, I'm okay. कहने के, is your institute okay? I said, yes, it's okay. कहने के, are you sure? मैंने कहा, yes. कहने, American ambassador in Islamabad has written a letter to Dean of the University, Thomas Jefferson, and he has directed that letter to me, and there were 3 questions asked because your government is involved, PMDC is involved. I said, what is that? He said, he asked me, Dr. Musarrat Hasan has done the fellowship from your institute? And I wrote, yes. Is the institute affiliated with your university? And I said, yes. Is he competent enough to teach ultrasound? And he said, yes. So this is what he had written back. PMDC में उस ज़माने में 40 members होते हैं. I don't know how many of them are today. But PMDC के एक member is a retired judge of the High Court. तो मेरा case disciplinary action committee को refer किया, and the judge was asking all the questions and everything to different agencies. And then on the 40th meeting in Sheraton, right here in this hall, there was a PMDC meeting going on. उस ज़माने में Sayyid Ehtaram Ali Sahab was the secretary, was the longest secretary of that. उन्होंने मेरे पास बंदा भेजा कि जाके ये चेक करो कि इसका PMDC का सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है. So Government of Pakistan car was standing in front of my clinic, and I said, yes, I have this, so I gave it to them. So this was the PMDC certificate. And then in that meeting in this hall was decided. In the meantime, I always, you know, I love quotations. Peace of mind is that mental state in which you have accepted the worst. I was prepared for the worst to happen, but the judge of that PMDC wrote one line in the judgment, teaching is not a crime. Hence, Dr. Musarrat is acquitted of the charges. मेरे पास बहुत लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो इतने मशरूम ऑफ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स हैं, तो मेरा ये क्राइम है कि मैंने अल्ट्रासाउंड को by training so many, every nook and corner you'll find ultrasound, and in many big institutions there are my students who are working at it. ये जो 29,000 hours हैं, ये according to a statistic कि अगर आप 25,000 घंटे से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट पे बोल लें तो आप खप्ती कहलाते हैं, यानी थोड़ा सा पागल के करीब हो जाते हैं. And I spoke on ultrasound subject for 29,000 hours in last 42 years. मैंने कहा कहीं नज़र ना लगे. I became the AIM member. I is myself, and I was, because of my service to AIM, they gave me the fellowship of the AIM as well. Now we move on from this, the stories, happy moments. I happened to go into Khane Kaaba inside, and I was all alone for half an hour inside Khane Kaaba. And I had very good memories of Masjid-e-Nabwi as well. And the 3 generations did the Hajj. My grandparents, my parents, and myself. So we were 3 generations doing the Hajj together. And then I took my mother in 2005 for Hajj. They were the golden memories of mine. And then the golden memory turned into when Fatima graduated, and that's the picture of her graduation. And then, of course, happy moments when she got married.
And then I got a beautiful son-in-law, right, sitting in the center. He is a lawyer by profession, and they are doing very well in UK now. Coming to publications, my first book was on palmistry. The title was Call Yourself Palmist. मैं अभी भी करता हूँ palmistry, but I see the hands of unmarried girls only. तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद सब लोग हाथ दिखाना शुरू हो जाएं. तो प्लीज, डॉक्टर शाहीन ज़फ़र ने इतनी ज़बरदस्त मेरी तस्वीर लगा के पब्लिसिटी की है कि रिश्ते आना शुरू हो गए हैं. So this is the second book I wrote on, because I'm the chairman of the History and Archiving, the longest serving chairman of the History and Archiving, and I compiled all the data regarding ultrasound. And then my third book was, of course, Self-Refinement Through Reflection. Many of you already have that. Isme, I would like to mention that just the first person to respond, I have got a lot of regards, is Professor Rashid Latif Saab. मैंने तो ऐसे ही किताब लिख के भेजी थी, उन्होंने कहा कि ये तो इतना ज़बरदस्त वर्क है, और उन्होंने फ़ौरन उसका रिव्यू भेजा. फिर then second was जावेद जब्बार साहब, सेनेटर. उन्होंने कहा ये इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन. एंड देन ग्रामर स्कूल की मिसेस मुजाहिद, उन्होंने कहा ये दिस मास्टरपीस. That compelled me to publish this book. And in the title one is Be the Candle or the Mirror Which Reflects. And this is what I have been practicing. Give to the world the best you have, and the best will come back to you. This book is full of pearls of wisdom, and this is the contents. I'll go fast. There's a saying, aspire to inspire before you expire. तो आप जितना लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं. Mediocre teacher tells, good teacher explains, excellent teacher demonstrates, great teacher inspires. और वो great teachers इस तस्वीर में सब लोग खड़े हुए हैं. You can see I was inspired by Professor Rashid Latif साहब. मुझे डायरेक्टली उन्होंने नहीं पढ़ाया. Those who are lucky जिन्होंने उनके साथ पढ़ा. और मुझे जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के उठता हूँ. Still I'm learning from him. So Dr. Lubna Indab, Dr. Sadka Jafri, Dr. Talat, everybody, Dr. Sadia Paul, she must be here, and Dr. Halima Yasmin. The other person who inspired me was Hakim Saeed Saab. He was the governor of Sindh at that time. I invited him to the Institute of Ultrasound. और उनका ये कमेंट था कि काश मुसर्रत ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट मेरे इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होता. इंस्टीट्यूट तुम्हारे इंस्टीट्यूट मेरे इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होता, हमदर्द यूनिवर्सिटी. आई कैन नेवर फिनिश माई टॉक अनलेस आई टॉक अबाउट डॉक्टर सादका जाफरी. शी इज़ द वन जिन्होंने मुझे कहा कि मुसर्रत, हाँ बड़ी महंगी मशीन ली है तुमने और तुम कमाई करोगे, हमारे पुअर पेशेंट का क्या होगा. मैंने कहा कि मैडम आपके पुअर पेशेंट आर माय पेशेंट, दे विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट इन जिना हॉस्पिटल. सो एवरी ट्यूसडे आई वुड गो टिल शी वाज देयर. और इसका लतीफ़ा ये है कि एक मरतबा मैं अपने काम से वेडनेसडे को गया तो डॉक्टर महमूदा सईद ने कहा आज ट्यूसडे है क्या. एंड आई कैन ऑल्सो नेवर फॉरगेट डॉक्टर जहांरा पॉल. वो जब भी मुझसे मैं जाता था वहाँ उनके PNS शिफा में, इन द यूनिफॉर्म शी वुड मीट मी, ग्रीट मी, हाथ मिलाती थी, हक करती थी. एंड आई डिडंट नो हर पर्सनली. I had such a good she was like mother. So, and then Rab Saab को एक मरतबा हमने invite किया. My batch was bigger, was for 48 candidates का batch था. That's right here. And we also invite some people from consulates to distribute the certificates. ये second batch है, just before that PMDC happened. और इसमें पीछे जो 6 लोग खड़े हुए हैं ये सब अब प्रोफेसर्स हैं. एंड एनीबडी कैन रिकग्नाइज डॉक्टर M.B. Jameel फ्रॉम निश्तर. ही वाज आल्सो आवर स्टूडेंट एंड राइट हियर वी कैन सी देम. हाउ कैन आई
not mention the great personality. मैं एज के साथ ओल्ड हो रहा हूँ और डॉक्टर शाहिदा एज के साथ यंग हो रही हैं. और एक हमारे महफिल में डॉक्टर तनवीर ज़ुबैरी इधर बैठी हुई हैं. ये विटनेस हैं कि जब ये अमेरिका आई तो मैंने इनको अपने हाथ से खाना पका के खिलाया है. शी इज़ विटनेस टू माई डिशेस. अब ये सिर्फ तस्वीरें रह गई हैं क्योंकि आई हैव फिनिश्ड ऑल द कोर्सेज. अब कुछ थोड़ी मोहब्बत की बातें भी हो जाएं, लव अफेयर की बातें हो जाएं, क्योंकि दैट्स व्हाट यू वांट टू हियर. माय फर्स्ट लव वाज विथ माय मदर. हम लोग जब छोटे होते थे, तुम किससे शादी करोगे? अम्मी से शादी करेंगे. और फिर सेकंड अफेयर जो है वो आपकी स्कूल टीचर, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. So my second love affair was also with this school. And then when I was in the college, मैंने ये कार्ड बना के अपनी दोस्त को दिया. उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया कि मैं सपेरा हूँ और वो नागन है. जब उसको ये मिला तो उसने रिश्ता तोड़ लिया. से ये वन साइडेड अफेयर था. उसके बाद ये टूट गया. मैं कई मरतबा ईरान गया और ईरान में जब मैं सारा दिन पढ़ाता था तो मैं कहता था मुझे कुछ घुमाने फिराने के लिए भी ले जाएं ताकि मैं देख लूं ईरान. तो मेरे साथ हमेशा 2 लड़कियां साथ कर दी जाती थीं और एक से एक खूबसूरत. जब मुझे वो एयरपोर्ट छोड़ने आए, द होस्ट, द प्रोफेसर, कहने लगे डॉक्टर मुसर्रत यू आर टू इनोसेंट. आपने बात ही नहीं की उन लोगों से. मैंने आपके साथ हर रोज़ कोई ना कोई भेजा और आपको पसंद नहीं आया. There is a saying, the best living is to live in English cottage with American heating, French mistress, Japanese wife and Chinese cook. अगर ये सब हैं तो आपकी बहुत अच्छी लिविंग होगी. अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं. ख़ास तौर से डॉक्टर शाहीन ज़फ़र ने कहा था कि अब कितने हो गए. ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम था तो मैंने 8-10 तस्वीरें निकाल दी हैं अवार्ड्स की. ये तस्वीर आप लोग गौर से देखें. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये तस्वीर खींची गई है जब डॉक्टर महमूदा सईद का रिटायरमेंट हो गया और सारा डिपार्टमेंट उनको फेयरवेल दे रहा था, लंच. तो सब लोग हार लेके आए थे और जब वो हार लेके आए तो मैडम की नज़र मेरे ऊपर पड़ी. मुसर्रत, यू डिज़र्व दिस बिकॉज यू हैव डन सो मच फॉर द वर्ल्ड कि ये हार तुम पहनो. तो ये हार मुझे उन्होंने पहनाया एंड दैट वाज द फर्स्ट अवार्ड विच आई गॉट, आई वुड से. सादका जाफरी मैडम, इन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा लड़का है. वो हर जगह किसी को इंट्रोड्यूस करती थी, अगर मैं नज़र आ जाऊं ये मेरा लड़का है. और डॉक्टर तलत ने तो हाथ पकड़ के मुझे, क्योंकि मैंने जब पीजीशिप की 2 इयर्स की गायनी वार्ड में, तो मुझे हाथ पकड़ के सिखाया डॉक्टर तलत ने. मैंने पहला लेक्चर गायनी ऑप्स में जो है वो सारे गायनेकोलॉजिस्ट को सिखाने की कोशिश की. तो उसमें डॉक्टर प्रोफेसर मजीद मेमन भी बैठे थे. एंड ऑफ द लेक्चर में उन्होंने कहा कि आज से हम डॉक्टर मुसर्रत नहीं कहेंगे, हम डॉपलर मुसर्रत कहेंगे. तो मुझे टाइटल मिला डॉपलर मुसर्रत का. फॉर इन्वेंटिंग और डिस्कवरिंग द कंट्रास्ट आई गॉट द रोल ऑफ ऑनर एंड आई गॉट $5,000 कैश प्राइज फॉर दैट पेपर एज वेल. I cannot forget Dr. Razian Kurejo and Dr. Sadia Paul when they decided to give me the award. और इसमें इतने bright लोग पीछे खड़े हुए हैं. They are witnessing that they are Dr. Lubna and Dr. Sher Shah and Dr. Madam Aftab Munir. I was really impressed when the PMA gave me the Services Award. And then they decided to give me the Living Legend Award. I'm very grateful to Professor Tipus that he is sitting here. He gave me that award. Receiving from his hand was really
तमगा इम्तियाज़ मुझे नहीं मिला है, but I've decided कि जब मैं आज घर जाऊंगा तो इम्तियाज़ स्टोर से खरीद लूंगा. Memories blast from the past. I happened to meet many times Prince Karim Aga Khan and his wife Salima Ahmed and his whole family. I'm sitting right here. A very special photograph, and I was offering rice dish to him, Prince Karim Aga Khan. I played shikar with some of the, this is General Yahya Khan. I had to know him, and that's General Ziaul Haq. You know, we had a lot of interaction with them. And Begum Rana Liaquat Ali, क्योंकि वो उनके मैंने अल्ट्रासाउंड भी बहुत सारे किए, और जब मैं उनके घर जाता था अल्ट्रासाउंड करने के लिए तो कहते थे बैठ जाओ, you must come and sit with me and talk. So I used to spend hours with her, and she was very delighted to see. I'm the person who have seen and met and done ultrasound of many of them you are seeing in this picture. And we have Professor Asif Zia. I'm so happy that she is here. And we see Shadi Khan in that. I don't know how many of you know Dr. Shadi Khan, but all those beautiful names. And I used to be favorite of all of them. I used to be favorite all of them. मैंने जब अपनी पीजी शिप में पहली एपिजियोटमी स्टिच की, तो ये उसके बाद की तस्वीर है. ये क्या है? क्योंकि मैंने सबको स्पिंजर का क्लब सैंडविच खिलाया था कि आज मैंने एपिजियोटमी खुद से स्टिच की है. एंड दिस वाज द फर्स्ट क्लिनिकल मीटिंग जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं. एंड यू कैन रिकग्नाइज डॉक्टर शाहिदा, डॉक्टर रज़िया अकबानी एंड मैडम इजाज़ फातिमा. एंड मैं इन लोगों का भी फेवरेट हूँ. एंड प्रोफेसर आसिफ ज़िया विल बी विटनेस टू इट कि मैं इन लोगों का फेवरेट होता था. तो ये लोग हमेशा, एंड हमें तो डॉक्टर आयशा सिद्दीका कहाँ चली गई, इन्होंने तो लास्ट टाइम रुला दिया था अपने माई लाइफ के उसके अंदर. एंड मुझे ये जनरल शैला बकाई सिटिंग राइट हियर. मैं कहा तस्वीर तो मुझे फिर भी दिखानी है. इन्होंने जब हमें वाघा बॉर्डर दिखाया और व्हाट अ वीआईपी, मुझे उस दिन थोड़ा सा ख्याल आया कि अगर मैं भी आर्मी में होता तो क्या बात थी. तो ये एक रिग्रेट हो सकता है. एंड थैंक यू, मैंने अभी आपका जिक्र किया, थैंक यू वेरी मच. एंड दीज आर द प्रोफेसर्स जिनके साथ बैठ के they are inspiring professors sitting in this audience, and many of them are here. I can see Professor Farooq, I can see others as well. And I wanted to, because I knew that you were coming, so I would put this slide again. 3 times I escaped death. Once it was in the swimming pool, मुझे कोई drown करने की कोशिश कर रहा था, and this is my friend who saved me. So I owe a lot to him. आज मैं हूँ तो he saved my life. And there were other 3 incidents as well, which I would see the worlds with children's eye. You will enjoy this world. And enthusiasm is the horse you should drive. Create happiness. Happiness is self-contentedness. My international, I'll skip because I'm in the World Federation, and now they invite me for cutting the ribbon as well. My traveling history, my best partner is my own daughter. We traveled together, I enjoy her. And there's a saying, hadith, don't tell me how educated you are, tell me how much you have traveled. I have traveled around the globe 3 times, Saudi Arabia 19 times, USA 57 times, Turkey 16 times, and UAE 62 times. And why I'm showing? Because abhi Arab health ho rahi thi, usse pehle mujhe UAE ka visa refuse ho gaya. So pata chala कि 99% लोगों को refuse हो रहा है. And these are my different countries which I saw. मैं अपना Muslim shower साथ लेके travel करता हूँ. You can ask me how do I do that. I carry my own slippers when I'm in business class or I'm in Airbus 380. And whenever I return, my friends say, oh, Ibn Battuta ho gaye ho, when I go to Morocco.
And when I go to Mongolia I went, तो उन्होंने कहा ओहो ये तो मार्को पोलो हो गए हैं. और जब मैं लिस्बन गया तो उन्होंने कहा ये तो वेस्को डी गामा हो गए. I'll skip these 3 daring acts which I did. I'll skip that. And मेरा इरादा था कि मैं गाना भी गाता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, करत भी करता हूँ, कव्वाली भी करता हूँ. तो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग थी, मगर मैडम ने कहा कि टाइम कम है तो रात में करेंगे, आज रात में करेंगे. तो मैंने इसमें से लाइव रिकॉर्डिंग हटा दी है. अंदर की भी बात बता देता हूँ. मैं आज अपने कपड़े खुद धोता हूँ और वॉशिंग मशीन में नहीं, टब में डाल के धोता हूँ आज भी. और अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ. ये नहीं कि मैं आई प्ले चेस, टेबल, एंड दैट्स हॉबीज. पामिस्ट्री आपको मैंने बता दिया. Whenever I came across a good saying and quote, it was already part of my personality. And audience doesn't mean to me because I'm very happy with few people. 5 ways to acquire wisdom, I'll skip that. Hungry stomach, empty pocket and broken heart can teach you some of the best lessons. I've got stories after stories on this slide. Balance create karna amongst the 5, I keep on concentrating on that. The price of excellence is discipline. I want to discipline. I'm very strict with myself. The only people who deserve to be in your life are the ones who treat you with love, kindness and total respect, and they are all sitting over here. I have inspirational, renowned personality interaction. I will not name individually, but 70% of them I did ultrasound also. So I met these people, I met these people, I met these people, I met these people, and I've met these people. I'll only talk about Melody Queen, Madam Noor Jahan. When she came to my clinic, बैठे आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, कहने कि डॉक्टर साहब कितने पैसे हुए. नहीं मैडम आपसे पैसे कैसे, नहीं पैसे देने हैं. मैंने नहीं मैडम पैसे नहीं देने हैं. कहने फिर आप ये ना कहिएगा कि जाते हुए गाना सुना दें. मैंने फिर उनसे ये इजाज़त ली कि मैडम ये मैं जोक सुना सकता हूँ. उन्होंने कहा हाँ. If God wanted me otherwise, He would have created me otherwise. My life is my message. Attention is the rarest and purest form of generosity. Thank you for being generous. Fatma ने last clip भेजी है. Can we play? ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम. ताबीर है जिसकी हसरतो गम, ताबीर है जिसकी हसरतो गम. ऐ हम नफसो वो ख्वाब है हम. ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम. वाओ, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए. I request Dr. Tipu Sultan to please come on this stage. Thank you, Dr. Musarrat, for taking us into a wonderful world of beautiful and colorful memories of your life. Thank you so much, sir.